Rachita Agarwal and Megha Jain take immense pleasure in hosting our first about shaping character. We extend a grand red carpet welcome to all our respected parents, well-wishers and dear friends. Thank you for gracing us with your invaluable presence today. It's truly wonderful to see all of you eagerly waiting to witness the performance of our little stars who have been preparing for this day with unwavering enthusiasm and dedication. Today belongs to you and your little ones, students who have poured their hearts and souls into making this event a grand success. So give a thunderous round of applause for our bright and talented kids. You can expect an extravagant and a complete entertaining day ahead. The children's performance will definitely leave you mesmerized. You know that every child has worked so hard to present before you a spectacular show. So please keep the thunder of claps big for each and every act. But before we start, we request parents to kindly adhere to the following guidelines for the smooth flow of the program. Parents are not allowed to meet their children backstage. Hello. Parents are not allowed to meet their children backstage in the green room. If a child feels uncomfortable, our team will personally reach out to you. Please keep your mobile phones on silent mode. Stay seated. We have arranged for professional photography and videography, and the recordings will be shared with you. Thank you for your cooperation. Light symbolizes brightness, knowledge, and prosperity. Just as sunlight dispels darkness, blessings illuminate our lives with joy and wisdom. Tamso Ma Jyotirgamya. Lead us from darkness to light. Lighting the lamp amounts to awakening the Atma Jyoti within oneself, to invoke divine blessings and make this occasion auspicious. We invite our beloved principal, Ms. Stuti Jain, and our esteemed business partner, Mr. Pulkit Jain, to light the ceremonial lamp. It is with immense joy and pleasure I take great joy and pride in inviting you to our preschool's first annual day celebrations. Today I really want to talk about certain things. It is very new for our kids to be here. So my whole thing, whatever I'll be talking, is today's experience. Please, today is a very special occasion as we come together to celebrate the journey of our young learners, the dedication of our preschool teachers and our parents who have put everything in, shaping their child's future in these early years. A preschool is more than just, a place of learning. It is the child's first step in the world of exploration, curiosity and growth. Here, our little ones not only learn the ABCs and the numbers, it is, they develop the kindness,
confidence, and a sense of responsibility as well. Each day is filled with new discoveries, joyful laughters and meaningful experiences that build a strong foundation for a better future. Our children have shown tremendous growth and enthusiasm, and I am sure you will probably vouchsafe for the same. Our kids have shown tremendous growth and enthusiasm throughout the year. From their hesitant steps into their classrooms to their confident performances today, every milestone is a testament to their limitless potential. Their innocent smiles, inquisitive minds, and boundless energy inspire us every day, and it simply motivates us to do our best in shaping their futures. I would like to take this opportunity to extend my heartfelt gratitude to our dedicated team of teachers and staff. Thank you so much for the efforts you have put in for today's program. And I would also take this opportunity to thank Mr. Gaurav Vaid and his team for the support he has given us throughout and helped us prepare for these annual day performances. Their patience, love and commitment ensures that each child here with us at First Try Intellitorts Preschool feels safe, feels valued and motivated to learn in all ways that we can. To our dear parents, thank you for your trust and support you have shown in us in our early years of working. Your encouragement and active participation in your child's early education makes all the difference. As we look forward to witnessing the delightful performances today, let us celebrate the joy and childhood and the promise of a bright future ahead. These moments of happiness, learning and togetherness are what makes the journey so special. Once again, I welcome you all and hope you enjoy this wonderful celebration. Let's applaud our little stars for their hard work and enthusiasm. Thank you and have a fantastic time ahead. Thank you so much, ma'am, for your inspiring and enriching words. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Dev Sarvakareshu Sarvada. Every auspicious occasion begins with the remembrance of the Almighty. To seek divine grace and purify the stage, we present a devotional Ganesh Vandana by Miss Manmeet. So everyone, let's chant together. Ganpati Bappa Moria. Mangal Murti Moria. सर्वांगी सुंदर उदिचेंदुराची कंठी जळके मान मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती होशी मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे वाद कामना पूर्ती जय देव जय देव लंबोदर तू विनायक तू
the show, truly satisfying the characteristics of a great dancer. Elegance, poise, strength and agility. I'm still lost in it. Thank you, welcome our preschoolers for the national song. It's been an anthem of patriotism for revolutionaries and freedom fighters. Our little ones are ready to showcase their love for the nation. Let's encourage them with a big round of applause. वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी कुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् That was mesmerizing. Well done, kids. Jai Hind. Right, kids, on the stage to set the stage on fire with their vibrant dance performance. So here we are welcoming our preschoolers, our little bridge course kids. Play the party freeze game. Now remember, when I say freeze, freeze. And when I say dance, dance. Now stop when I say freeze. Now stop when I say freeze. Everybody, get ready to skip. Now stop when I say freeze. Everybody, get ready to twirl. Twirling, twirling all around. Twirling, twirling, twirling. Twirling any way you please. Now stop when I say freeze. Everybody, get ready to dance. Dancing, dancing all around. Any way you please. Now stop when I say freeze. That was mesmerizing. Well done, kids. Such a cute performance it was. Wasn't it, parents? Let's give them a big round of applause. Nature is our lifeline and trees are the lungs of our planet. Trees give us oxygen, shade and life. Yet deforestation is causing severe damage to our environment. Today, our little environmental warriors will spread an important message. Save trees, save life. Dear parents, we request
request, please do not wave to your child. It's a humble request, please do not wave. आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, अभी धूप बहुत तेज है कहकर बैठे हैं उसकी छांव में, अभी धूप बहुत तेज है कहकर बैठे हैं उसकी छांव में. Let this beautiful thought sink in as our young performers remind us of our responsibility towards Mother Earth. Their performance is a tribute to the beauty of nature and a call to action to preserve it for future generations. So let's put our hands together and cheer for these little protectors of the environment. मुझसे सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी. मुझसे सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी. मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है. ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है. हाँ, बड़ा दुखता है. हाँ, दुखता है. ना काटो मुझे दुखता है. मैंने दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया. था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया. मैंने दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया. था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया. तू बेशर्म है, होता न शर्मिंदा है. ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है. मुझको बचा ले दुनिया जहां, चाहूं मैं सबका भला. हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या. मुझको बचा ले दुनिया जहां, चाहूं मैं सबका भला. हर हाथ से एक पौधा नया लग
दुखता है। What a heart-touching message. The dedication of our young ones to this noble cause is truly inspiring. Let's all pledge today to plant more trees and protect our beautiful planet. Now to recite a poem. Can we have Aman ma'am on the stage, please? अब मैं आप सबके सामने हमारे जो टॉडलर्स हैं उनके लिए एक कविता पेश करने जा रही हूँ, जिसका सिरलेख है नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, घर के राज दुलारे बच्चे। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, घर के राज दुलारे बच्चे। मासूमी की मूरत जैसे सबके राज दुलारे बच्चे। मासूमी की मूरत जैसे सबके राज दुलारे बच्चे। हंसते खेलते रहते हैं, नए सपने बुनते हैं। हंसते खेलते रहते हैं, नए सपने बुनते हैं। खेल खेल में हर दिन कुछ नई बातें चुनते हैं। खेल खेल में हर दिन कुछ नई बातें चुनते हैं। चंचल मीठी नटखट बातें, चंचल मीठी नटखट बातें सबका मन हर लेते हैं। पढ़ाई लिखाई खेल कूद में आगे आगे रहते हैं। पढ़ाई लिखाई खेल कूद में आगे आगे रहते हैं। प्यारे बच्चों सीखो तुम, प्यारे बच्चों सीखो तुम अच्छे संस्कार और ज्ञान की बातें। बड़े होके बनोगे कल जब, बड़े होके बनोगे कल जब, करना देश का ऊंचा मान, करना देश का ऊंचा मान। धन्यवाद। गरज उठे गगन सारा, गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा। हिल जाए जहां सारा, जब गूंजे जय श्री राम का नारा, जय श्री राम का नारा। जय श्री राम। Now let's take a journey back to the era of dharma, devotion and righteousness. The Ramayana, one of India's greatest epics, teaches us the value of truth, sacrifice, honor and duty. It is not just a story, but a guiding light that has shaped our culture for generations. The tale of Lord Rama is an embodiment of an ideal son, an ideal husband, and an ideal king. It teaches us the essence of virtue, patience, and courage in the face of adversity. Today, our talented little performers will bring to life this magnificent epic through a mesmerizing skit, portraying unwavering devotion of Sita, the strength and loyalty of Hanuman, and the wisdom and valor of Lord Rama in his pursuit of righteousness. Pran jaye par vachan na jaye. Let's welcome our young stars who will take us through the timeless journey of Ramayana with their wonderful enactment and expressions. Let's encourage them with a huge round of applause. राजा दशरथ की आज्ञा पाकर राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास पे निकल गए।
सीता माता ने एक सुनहरे रंग के हिरण को देखा। अरे कितना सुंदर हिरण है, ये तो सुनहरे रंग का है। स्वामी स्वामी, हाँ सीते, बताओ क्या हुआ। स्वामी, मैंने वहाँ एक सुनहरे रंग के हिरण को देखा है, क्या आप मेरे लिए वो ला सकते हैं? ठीक है सीते, तुम अभी यहाँ ही रखो, मैं अभी आया। बहुत देर हो गई, स्वामी अभी तक लौटे क्यों नहीं? लक्ष्मण लक्ष्मण, सीते। अरे ये तुम्हारे स्वामी की आवाज है। लक्ष्मण लक्ष्मण, देखो तुम्हारे लिए तुम्हें पुकार रहे हैं। हे माते, मेरे को ये कोई मायावी शक्ति का काम लगता है। आप चिंतित ना हो, भैया जल्दी ही लौट आएंगे। नहीं लक्ष्मण, मेरी आज्ञा का पालन करो, जाओ और अपने भैया की रक्षा करो। ठीक है माते, किंतु आप इस रेखा को पार मत करना। रावण को पता था कि वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने साधु का रूप धारण कर लिया और सीता माता को उठाकर अपने साथ अपनी लंका ले गया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम ऋषिवर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? बेटी, इस साधु को कुछ भिक्षा दो। आप यही रुकिए ऋषिवर। ये लीजिए। हे देवी, एक साधु का इतना अपमान, घर के द्वार से ही भिक्षा देकर भेजना चाहती हो? जाओ, नहीं चाहिए मुझे भिक्षा। नहीं नहीं ऋषिवर, रुकिए, मैं आती हूँ। मैं कोई साधु वाधु नहीं, रावण हूँ, रावण। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, चलो मेरे साथ मेरी लंका में। बचाओ बचाओ, स्वामी स्वामी। राम लक्ष्मण सीता माता को कुटिया में ना पाकर बहुत चिंतित हुए और उनकी खोज में निकल गए। प्रभु श्री राम ने श्री हनुमान को अपनी अंगूठी देकर लंका भेजी। प्रणाम माते, सुखी रहो पुत्र। तुम कौन हो? मैं प्रभु श्री राम का परम भक्त हनुमान हूँ। परंतु मैं कैसे मानूं कि तुम्हें मेरे प्रभु श्री राम ने भेजा है? ये लीजिए माते, प्रभु श्री राम ने मुझे ये आपको देने के लिए कहा है। अरे ये तुम्हारी स्वामी की अंगूठी है। माता, आप चिंतित ना हो, प्रभु राम इस रावण का वध करके आपको लेकर जाएंगे। आप मुझे आज्ञा दीजिए माते। ठीक है पुत्र, जाओ, लेकिन मेरे प्रभु राम से कहना कि उनकी सीता उन्हें बहुत याद करती है। जो आज्ञा माते। श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान लंका पहुंच गए और श्री राम और रावण का घमासान युद्ध हुआ और जिसमें प्रभु श्री राम विजय हुए।
इसलिए इस दिन को हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। What a captivating performance! Our little artists truly brought the magic of Ramayana to life with such grace and dedication. Let's applaud their effort. Moving forward, now parents, get ready to witness an adorable and energetic performance by our little stars of Flamingo. These tiny dots are all set to steal your hearts with their cute moves and endless enthusiasm. This performance is sure to bring smile to all of our faces. So put your hands together and cheer loudly as our little dancers take the stage. In the Barbie world, life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world, life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा पकड़ा चलता, खाओगे दिलों से चल बनाए आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा पकड़ा चलता, खाओगे दिलों से चल बनाए आशियाँ। गावे गावे ताल से आए वाले हर जिंदगी होठों पे उंगली जड़ा के हम ताले लगा के चल सुन तराने चुपके गाए आजी आजी मारे आया मुझे दिए सभी थोड़ा सा तेरा सा थोड़ा मेरा भी होगा अपना एक आशिया। देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे, देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी खुल के सोच आओ पंख जरा
guiding light. They sacrifice, nurture, and dream for their little ones before they even learn to dream for themselves. माँ के बगैर घर सूना होता है, माँ के बगैर घर सूना होता है और पिता के बगैर जिंदगी सूनी होती है. Today, we dedicate this special performance to all the parents whose love, care, shape the future of their children. Our young performers will now take us to an emotional journey expressing their gratitude through dance. So, round of applause for Little Tiny Tots. This performance is a celebration of parenthood. A heartfelt thank you to all the mothers and fathers who stand by their children through every joy and challenge. Let's give them a huge round of applause for their endless sacrifices and unconditional love. क्योंकि कहते हैं ना, मेरी हर जिद पूरी की इन्होंने, मेरी हर जिद पूरी की इन्होंने, वो माँ बाप भी किसी खुदा से कम नहीं. तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा दिल, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की दस्तक. और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा. मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा. मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा. मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा. मैं क्या करूं. तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी. मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी कि ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी. मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी जिंदगानी. ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ बना देगी हर गम को. तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो.
everything. Let's take a moment to applaud all the wonderful parents here today. Now, moving forward, as our kids are getting ready behind backstage, we will like to play a short game, fun game actually. So, we are doing some fun riddles. Are you all ready? Yes. Excited? Yes. Okay, just raise your hands and our teachers and aunties will come to you. What gets wetter the more it dries? Be quick. Yes, Manmeet ma'am? Towel. Superb. What has words but never speaks? Yes, Manmeet ma'am, backstage. What has words but never speaks? A dictionary. Okay, he's right up to some extent. We have the answer as a book, but it's okay. What has to be broken before you can use it? Yes? One more child. An egg. Superb! Big round of applause. What can you keep after giving it to someone else? Yes? Superb. We have got the answer. Okay. It's okay. You can give the gift over there also and here as well. Ma'am, it will be a gift. Okay. What has one head, 1 foot and 4 legs? Yes? Manmeet ma'am, please come this side. Okay. Yes? What has 1 leg? Okay, please don't use Google. What has 1 head, 1 foot and 4 legs? Ma'am, please give one chocolate here. Second row, second later. What has... Manmeet ma'am, see there. One hand is raising. A bed. Superb! Now my next riddle is, what has hands but not clap, but doesn't clap? Oh, superb! I think that was quite easy. Which building has many stories? Burj Khalifa. No, can we have someone else please? Which? Tower. No. Tower. No. Which building has... Yes, it's the right answer, the library. Okay, now I expect many hands to be raised for this question from ladies especially. Which is the most romantic fruit? Come on ladies. Yes, we have one hand raised. Only few hands. Strawberry. No. Which is the most romantic fruit? Passion fruit. Ma'am? No. Yes, we are getting the answer from backside. A date. Yes. What are the 2 things people never eat before breakfast? Lunch and dinner. Okay, again that was a quite Lunch easy and one. dinner. Yes. Okay, the next one is कोई मुझे नहीं चाहता
मैं फिर भी सबके पास आता, मैं करता सबके कष्ट दूर, लोग भागे मुझसे दूर। Yes, anyone? कोई मुझे नहीं चाहता, मैं फिर भी सबके पास आता, मैं करता सबके कष्ट दूर, लोग भागे मुझसे दूर। Yes, we have Moksha's father. Ma'am, yes. Garlic. नींद। Not getting you, sir. I think garlic. No, no. कोई मुझे नहीं चाहता। Okay, to some extent. Yes, any guesses? We have a hint. Injection. Medicine is the right answer. Who gave that? Okay, so the right answer is medicine. What kind of dogs never bites? Okay, that was again an easy one. That's it. Now we all set for our next set of event. Okay, Manmeet ma'am, please come on the stage.